Polity from Tarun Well through MCQ आज होची पार्ट 2 पार्ट 1 ଆମେ ସାରି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ପାର୍ଟ 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚलो ଆଜିର ଟପିକ होची schedules parts ଆଉ preamble of the constitution ହେଲା question the Indian constitution has been described as quasi federal by dash Indian constitution quasi federal ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ କହିଥିଲେ ଆମର କେସି ୱେରେ ऑप्शन ए होची ठीक आंसर ठीक अछि a quasi federal constitution is a system of government that combines feature of both the federal and the unitary feature ठीक अछि quasi federal कोटा जोथरे कि both federal और unitary features थिबो सेटा होची quasi federal The Constitution Assembly was finally passed and accepted on this. Constitution Assembly finally passed and accepted on the November 26, 1949. Option C. ठीक अच्छे. The last session of the Assembly held on January 24, 1950. आमर Constitution finally बनीगला आउ accept हैला November 24, 1949 रे. Next question. The Constitution Assembly came into effect on this. Constitution बनित गला बट केबे सेटा came into effect आसिला केबे आसिला हमरो January 26 1950 रे ओके ऑप्शन डी ठीक अछि करेक्ट आंसर इन 1929 January 26 Indian National Congress demanded पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन हमरो रेडी केबे ही जेतिला फाइनली एक्सेप्ट कर जेतिला नवंबर 26 1949 रे कॉन्स्टिट्यूशन बट came into effect हैला January 26 1950 रे because in January 26 1929 Indian National Congress पूर्ण स्वराज डिमांड करथिले लाहौर सेशन रे सेति कॉन्स्टिट्यूशन बनिला परे मध्ये जनवरी 26 जे ताको डिले करा गला और जनवरी 26 1950 रे it came into effect okay next question Constitution Assembly took days to complete the constitution Constitution Assembly केते टाइम नेथिला constitution को कंप्लीट करबा पई Constitution Assembly नेथिला 2 year 11 months and 18 days ठीक अछि ऑप्शन C contained a preamble 395 articles 8 schedules and 22 parts Constitution Assembly 2 वर्ष 11 मास 18 दिन नै कि Constitution को बनेथिला आउ Constitution जेतले बनेथिला सेतले सेतरे 395 articles 8 schedule आउ 22 पार्ट थिला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन During the making of the constitution period it held days session and a total of days Constitution ro making बेले Constitution Assembly total 11 session आउ 165 days रे नेतिला ठीक अछि ऑप्शन ए ठीक अछि from 9 December 1946 to 24 January 1950 first meeting first session to last session next question with the commencement of the Constitution of India days were replaced जेतबेले Constitution of India आसीगला came into effect सेतेबेले Government of India Act 1935 आउ Independence Act 1947 दुटा को रिप्लेस कला हमर Constitution ठीक अछि त एतिर आंसर हे जिवो both option B name of the state and union territories come under name of the state आउ union territories को schedule under आछि schedule 1 ठीक अछि ऑप्शन C salary of the president governor etc come under the schedule 2 schedule 1 रे आसिला हमर name of the state and union territory schedule 2 रे आसुची हमर salary of the president governor etc ठीक अछि next question allocation of the seat for the state and union territories in Rajya Sabha come under dash schedule allocation of seat
जो राज्यसभा रे काहाकू केतेटा सीट मिलिबो स्टेट को यूनियन टेरिटोरीज को से जिनसटा को शेड्यूल अंडर आछी हमर सेटा आछी हमर शेड्यूल एलोकेशन शेड्यूल 4 रे ठीक अछि आउ ओथ एंड एफर्मेशन कम अंडर द शेड्यूल 3 रे आसिला हमर ओथ एंड एफर्मेशन और शेड्यूल 4 रे एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज इन राज्यसभा नेक्स्ट क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ scheduled areas and scheduled tribes come under the schedule schedule area ଆଉ scheduled tribes ର एडमिनिस्ट्रेशन ଆଉ कंट्रोल को schedule अंडर आछी सेटा छै हमर schedule 5 अंडर रे ऑप्शन ए provision for the administration in the tribal area of the Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram शॉर्टकट रे मन रखिया पे AMTM लिखि देछि एमते हमर AMPM अछि सेमति AMTM ए रे आसाम एम रे मेघालय टी रे त्रिपुरा एम रे मिजोराम कम्स अंडर द शेड्यूल 6 ओके शेड्यूल 5 रे कोन आसिला एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब आसिला शेड्यूल 5 रे शेड्यूल 6 रे आजि गला 6 रे आसिला प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्राइबल एरिया of the Assam, Meghalaya, Tripura and the Mizoram ए चारटा स्टेट केमते मन रखिबा AM PM हिसाब रे AM P जगह रे T कर देले AM TM आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोराम कोन अंडर द शेड्यूल 6 नेक्स्ट क्वेश्चन which schedule contain provision for union state and the concurrent list को schedule करछि हमर शेड्यूल 7 ऑप्शन डी ठीक अछि ओके तो यूनियन रे हमर अछि 100टा सब्जेक्ट स्टेट रे 61 टा और कॉन्करेंट लिस्ट रे 52 टा सब्जेक्ट अछि ओके ठीक अछि यूनियन रे 100टा स्टेट रे 61 आउ कॉन्करेंट रे 52 under schedule 8 how many languages were recognized by the constitution schedule 8 हिसाब रे केतेटा लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कराइछि 22 टा लैंग्वेज को ऑप्शन डी ओरिजिनली 14 एट द बिगिनिंग जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशन बनेथिला सेतेबेले 14 टा लैंग्वेज थिला सेतिरे बट विथ अमेंडमेंट लैंग्वेजेस ऐड हला आ 22 लैंग्वेजेस हे वाला ठीक अछि देखिबा को अमेंडमेंट सिंधी वाज एडेड इन 1967 बाय 21st अमेंडमेंट फर्स्ट सिंधी एड हेतिला 21st अमेंडमेंट 1967 रे नेक्स्ट मणिपुरी नेपाली एंड द कोंकणी in the 1992 by 71st amendment 71st amendment रे आउ तीनटा लैंग्वेज मणिपुरी नेपाली आउ कोंकणी एड हला in 1992 and बोडो डोगरी सांथाली and the मैथिली in 2003 in 92nd amendment ठीक अछि फर्स्ट हेतिला 21 amendment मने रखिबार छोटो ट्रिक टे सेकंड हे गला 71 amendment 71st amendment 21 आउ 71 मिसी गले केते हला 92 सेटा गला थर्ड अमेंडमेंट हमर 92nd अमेंडमेंट 2003 रे मिसिला बोडो डोगरी सेंथली मिथिली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोंकणी मणिपुरी एंड द नेपाली वर एडेड इन डेस बाय डेस अमेंडमेंट एबे हम पढिथिले कोंकणी मणिपुरी नेपाली एडेड इन हमर ऑप्शन ए 1992 71st amendment and the Bodo Dogri Santhali Mithili in 2003 92nd amendment ठीक अछि next question this schedule contains acts and order related to legislature dealing with the land reform and evolution of जमींदारी system ठीक अछि को schedule act and order जोटा कि land reform और evolution of जमींदारी system ऊपर डील करे को शेड्यूल रे सेटा अछि हमरो अछि हमरो शेड्यूल 9 ऑप्शन बी ठीक अछि एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951 ठीक अछि शेड्यूल 9 रे कोन अछि शेड्यूल 9 contains act and orders related to the legislature dealing with land reform and
evolution of जमीदारी सिस्टम ठीक अछि जोटा कि हमर फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 रे एड हेतिला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच शेड्यूल डील विथ एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 ऑप्शन ए ठीक अछि एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट इन 1985 Schedule 10 deals with anti-defection law added by the 52nd Amendment in 1985. Next question. This schedule contains provision of the Panchayati Raj. Total केतेटा schedule थिला 12टा schedule थिला तो 10टा schedule सरीगला एबे next schedule आसिला 11th ओके हमर पंचायती राज 11th schedule deal करे जोटा कि एड हेतिला एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट 1992 पंचायती राज बिल ठीक अछि इंपोर्टेंट अछि पंचायती राज केउ शेड्यूल रे अछि हमर जोटा कि अछि हमर 11th शेड्यूल रे एड हेतिला 73rd अमेंडमेंट 1992 नेक्स्ट क्वेश्चन दिस शेड्यूल कंटेन प्रोविजन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 11 नंबर थिला पंचायती राज तार नेक्स्ट 12 नंबर आसीगला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओके पंचायती राज केबे एड हेतिला 73rd अमेंडमेंट रे एड हेतिला आउ तार नेक्स्ट म्युनिसिपल हला 74 अमेंडमेंट सेम ईयर 1992 रे नगरपालिका बिल रे ठीक अछि 73rd अमेंडमेंट को 73rd अमेंडमेंट रे आसीला हमर पंचायती राज आउ 74th अमेंडमेंट रे आसीगला हमर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दुटा जगह सेम 1992 next question this part deal with the territory of India okay schedule सरीला बे पार्ट को आसीबा this part deal with the territory of India को पार्ट डील करे पार्ट 1 डील करे territory of India ऑप्शन नंबर बी अंडर आर्टिकल नंबर 1 to 4 okay आर्टिकल नंबर 1 to 4 भितरे पार्ट 1 रे हमर टेरिटरी ऑफ इंडिया डील करे देश पार्ट डील विथ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को पार्ट डील करे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पार्ट सेकंड अंडर आर्टिकल नंबर 5 रो 11 ठीक अछि फर्स्ट पार्ट रे डील करे टेरिटरी ऑफ इंडिया सेकंड पार्ट रे डील करे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया फर्स्ट पार्ट रे डील फर्स्ट पार्ट रे अंडर आर्टिकल नंबर 1 to 4 and second part under article number 5 to 11 next question this part deals with the fundamental right of Indian citizen the fundamental right part second रे कोन थिला हमर part second citizenship of India part third रे आसी गला fundamental rights of Indian citizen ठीक अछि ऑप्शन बी अंडर आर्टिकल नंबर 12 to 35 अंडर आर्टिकल नंबर 12 to 35 ओके हम रिवीजन कर चलबा पार्ट 1 रे कोन थिला पार्ट 1 रे थिला टेरिटरी पार्ट 2 रे थिला सिटीजनशिप एंड पार्ट 3 रे आसीगला हमर फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिस पार्ट डील विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज डीपीएसपी को पार्ट रे डीपीएसपी विषय लिखा छी पार्ट 4 रे हमर ऑप्शन बी अंडर आर्टिकल नंबर 36 to 51 ठीक अछि पार्ट 1 रे हेगला टेरिटरी पार्ट 2 रे हेगला सिटीजनशिप पार्ट 3 रे हेगला हमर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 रे हेगला डीपीएसपी ओके नेक्स्ट पार्ट 4A added by the 42nd amendment in 1976 contains this पार्ट 4 रे जोटा कि 42nd amendment 1976 रे एड हेतिला सेतिरा हमर अछि फंडामेंटल नहीं ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ठीक अछि फंडामेंटल राइट थिला थर्ड रे 4 रे आसीगला डीपीएसपी 4A रे आसीगला ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन अंडर आर्टिकल नंबर 51A मन रखिथिबो 51A पार्ट 4A ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन नेक्स्ट क्वेश्चन दिस पार्ट डील्स विथ द गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल हमर डील करछि पार्ट 5 ठीक अछि ऑप्शन बी अंडर आर्टिकल नंबर 52 to 151 ओके कोथर पार्ट 5 डील करछि यूनियन लेवल गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल
Article number 52 to 151. This part deals with the government at the state level. Government at the state level part 6 सेटा थिला पार्ट यूनियन टा कोड केते थिला यूनियन थिला पार्ट 5 रो 151 तापर स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल आसीगला हमर पार्ट आर्टिकल नंबर 152 टू 237 जोटा कि अछि हमर पार्ट 6 रे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट वाज एडेड बाय द 7th amendment 1956 sorry added को दे deleted which part was deleted by the 7th amendment 1956 part 7 थिला मोर पार्ट मान को भीतर पार्ट 7 पार्ट ता जोटा के डिलीट करा गला 7th amendment 1956 रे आर्टिकल 238 थिला जोटा कि हमर डिलीट करा हे गला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन which part deals with the union territory part 8 deal करे union territory under article number 239 to 241 ठीक अछि पार्ट 8 सब पार्ट को मन रखिया लगे पड़िबो आ बार बार रिवाइज करले बार बार प्रैक्टिस करले ही मन रहइबो आ तार किछि शॉर्टकट उपाय नाही ओके पार्ट 8 ऑप्शन बी ठीक अछि अंडर आर्टिकल नंबर 239 टू 241 यूनियन टेरिटरी संगे डील करे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट डील्स विथ द पंचायती राज को पार्ट रे डील करे हमें पढ़ी थिले पंचायती राज को शेड्यूल रे डील करे को केते नंबर शेड्यूल रे पंचायत 11 नंबर शेड्यूल रे सेमति को पार्ट रे अछि हमर 9 नंबर पार्ट रे अछि ओके आंसर ए ऑप्शन ए ठीक अछि 9 एडेड बाय द 73rd amendment मने थिबो आपण मानकर 73rd amendment 1992 रे आउ 11 शेड्यूल रे सेमति नेक्स्ट 74th amendment रे आसीगला हमर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेम ईयर 1992 एटा गला 12th शेड्यूल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज पार्ट 9 रिलेट करथुला हमर पंचायती राज तापरे पार्ट 9 ए बिकॉज एटा पर अमेंडमेंट हे कि एड सेति में पार्ट 9 ए करा हला ऑप्शन डी ठीक अछि एडेड बाय द 74th amendment year 1992 एज 12th शेड्यूल ओके मन रहिला कंफ्यूज हेबानी शेड्यूल पंचायती राज रो होची शेड्यूल 11 एंड म्युनिसिपैलिटीज रो होची शेड्यूल 12 आ पार्ट होची पंचायती राज रो 9 आ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो होची 9 ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट डील्स विथ द कोऑपरेटिव सोसाइटी पंचायती राज हला 9 पार्ट 9 तापरे म्युनिसिपैलिटीज हला पार्ट 9 ए तापरे पार्ट 9 बी डील कला हमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आंसर सी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट डील्स विथ relation between the union and the state को पार्ट डील करे हमर पार्ट 11 डील करे relation between the union and the state under article number 245 to 263 relation between union and state part 11 next question which part deals with distribution of revenue between the union and state को पार्ट डील करे revenue रो distribution between union and state को part 12 option C under article number 264 to 300 A ठीक अछि distribution of revenue between union and state part 12 next question which part deals with UPSC and public service commission okay UPSC and public service commission जदि यूपीएससी क्रेक करिवार अछि किमा पब्लिक सर्विस रे जिबार अछि तो आपण मन केते घंटा पढिबा पड़िबो 14 घंटा पढिबा पड़िबो नहले एग्जाम क्रेक हेबो नाही एटा गोटे ट्रिक मन रखिया पई पार्ट 14 ठीक अछि यूपीएससी आउ पब्लिक सर्विस कमिशन को पार्ट रे से पार्ट 14 ऑप्शन सी ठीक अछि अंडर आर्टिकल नंबर 308 रो 323 नेक्स्ट क्वेश्चन which part deals with the administrative tribunal set up by the parliament to hear dispute and complaints regarding the union state or the local government employees को पार्ट डील करे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रे पार्ट 14 ए ठीक अछि
under article number 323A to 323B added by the 42nd Amendment 1976. Okay. Part 14A Administrative Tribunal under article number 323A to 323B by the 42nd Amendment in 1976. Which part deals with the election? Also the election commission. को part deal करे election 15 part 15 part 15 option number D ठीक अछि under article number 324 to 329. Election commission also the election रे को part deal करे part 15 under article number 324 to 329. Which part related to the official language? को part related करे official language part 17. Okay. Option number C under article number 343 to 351. There is no other ways to remember this. Okay. Multiple revision, multiple practice करले पड़िबो ताले ही मन रही. Which part deals with the emergency provision? को part emergency provision रे deal करे? हमारा part 18 emergency provision रे deal करे. आंसर ए ठीक अछि अंडर आर्टिकल नंबर 352 रु 360 जोटा कि डिटेल रे पढिबा इमरजेंसी प्रोविजन प्रेसिडेंट पढिला बेले. ओके कोन 352 आर्टिकल 360 सब डिटेल रे पढिबा इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट नंबर 18. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच पार्ट डील्स विथ द एग्जेम्पशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर? को पार्ट डील करे एग्जेम्पशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर पाई? पार्ट 19 अंडर आर्टिकल नंबर 361 to 367. Protection from being answerable to court for the exercise of their power. Okay. कोर्ट को answerable हेबारु एग्जिम करे प्रेसिडेंट और गवर्नर को पार्ट अंडर रे हमर पार्ट 19 अंडर. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which part deals with amendment of constitution? को part deal करे amendment? Part 20. Part 20 deals with the amendment of the constitution. Option C under article number 368. Important article मन रखिबे 368 deals with the amendment of the constitution under part 20. The preamble of the Indian constitution was famously described as political horoscope of the constitution by political horoscope of the constitution इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किए कहिथिले? हमर ऑप्शन डी के एम मुंशी कोन कहिथिले हमर कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हिंदी वर्जन ऑफ द प्रीएम्बल वाज रिटन बाय? हमर जो हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल नहीं कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय द वसंत कृष्ण वैद्य. ठीक अछि. The English version of the original Indian Constitution was handwritten by प्रेम बिहारी नरेन रायजादा. ओके इंग्लिश रे लिखिथिले प्रेम बिहारी नरेन रायजादा और हिंदी रे वसंत कृष्ण वैद्य. ठीक अछि. The objective resolution proposed by Dash ultimately become the preamble. The objective resolution proposed by किए प्रपोज करथिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू प्रपोज करथिले. ठीक अछि. प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. प्रीएम्बल होछि नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. ओके. The word socialist, secular and integrity were added by 42nd amendment in 1976. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. No concentration of power and money refers to नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी माने पावर और मनी को कंसंट्रेशन हबो नै जेमती सेटा को वर्ड डिस्क्राइब करे सेटा को माने सोशलिस्ट वर्ड डिस्क्राइब करे. और रिपब्लिक मींस नो रूम फॉर हेरेडिटरी रूलर्स एंड मोनार्की.
माने रिपब्लिक मीन्स नो हेरिडिटरी मोनार्क माने हेरिडिटरी हेबेनी जे भी नेक्स्ट रूलर बाय इलेक्शन हबो हेरिडिटरी हेबेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन free to follow internal and the external policy refers to free to follow internal और external policy refers to our sovereign word describe करे free to follow internal and the external policies को और democratic means elected representative ओके एमती रिपब्लिक मीन्स थिला हेरिडिटरी हेबेनी और डेमोक्रेटिक मीन्स जे भी रिप्रेजेंटेटिव चूज हेबो से बाय द इलेक्शन इलेक्टेड चूज हेबो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन feature of speaker in Lok Sabha is borrowed from किछि पार्ट पांचटा क्वेश्चन एथिरो रहि जाइछि जोटा कि नेक्स्ट पार्ट रे कंटिन्यू करबा एबे पांचटा देखि देबा ठीक अछि। फीचर ऑफ स्पीकर इन द लोकसभा इज बोरोड फ्रॉम द स्पीकर इन लोकसभा रो जो स्पीकर थांती से फीचर टा हमर कोड बोरोड करा आइछि हमर यूके2 ठीक अछि ऑप्शन है यूके2 आउ कोन कोन बोरोड करा आइछि नॉमिनल हेड जे कि हेला हमर प्रेसिडेंट लागि यूके रे जेमति क्वीन रहउथिले कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स पोस्ट ऑफ द पीएम पार्लियामेंटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बाइकैमरल पार्लियामेंट ए सब फीचर्स यूके2 बोरो करा हिची। नेक्स्ट क्वेश्चन फीचर ऑफ लोअर हाउस इज मोर पावरफुल इज बोरोड फ्रॉम एटा भी यूके2 ही बोरो करा हिची लोअर हाउस इज मोर पावरफुल लोकसभा और मोर पावरफुल ऑप्शन बी ठीक अछि। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पोंसिबल टू द लोअर हाउस ए फीचर्स स्पीकर इन द लोकसभा रो स्पीकर ऑफ फीचर्स जोटा कि प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़िले सिंगल सिटीजनशिप पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस प्रीरोगेटिव रिट्स और रूल ऑफ लॉ ए सब फीचर्स यूके2 बोरो करा हैछि भलो कि मन रखिबे क्वेश्चन आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन फीचर ऑफ प्रोविजन ऑफ स्टेट इज बोरोड फ्रॉम हमर जो स्टेट प्रोविजन ऑफ स्टेट ए फीचर्स टा कोड बोरोड कराइ छै हमर फ्रॉम द यूएस ओके ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट written constitution executive head of state known as the president and he being the supreme commander of armed forces ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଜ ଦ ଏକ୍ସ ଅଫିସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା ଏ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ବୋରୋଡ କରାଯାଇଛି ଆମର ୟୁଏସ2 କଣ କଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ written constitution executive head of the state known as president and he being the supreme commander of armed forces vice president as the ex officio chairman of the राज्यसभा राज्यसभा रो एक्स ऑफिसर चेयरमैन किए हेबे वाइस प्रेसिडेंट से फीचर्स ता हमर कोड आछि यूएस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन फीचर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बोरोड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट रो फीचर्स कोड बोरो कराइछि एटा भी बोरो कराइछि हमर यूएस2 ऑप्शन नंबर डी प्रोविजन ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड द जुडिशियल रिव्यू idea of the preamble removal of the supreme court judge and the high court judge and the president ए सब फीचर्स बोरो कराइछि यूएस2 देखि दबा उतरे प्रोविजन ऑफ द स्टेट रो प्रोविजन प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ले इंडिपेंडेंस जुडिशियरी रिलेटेड जहां भी आछि मैक्सिमम यूएस2 बोरो कराइछि ध्यान रखिबे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड द जुडिशियल रिव्यू idea of preamble removal of supreme court judges high court judges and the president from US borrowed from the US. Next question feature of the ideas of liberty equality and fraternity is borrowed from liberty equality and fraternity रो idea कोड बोरो कराइछि हमर फ्रांस टू ऑप्शन ए ठीक अछि idea of liberty equality and fraternity is borrowed from the France. Explanation concept of republic is also borrowed from the France. Concept of republic is also borrowed from the France. Last question feature of DPSP is borrowed from DPSP Directive Principle of State Policies. ए फीचर्स टा हमर बोरो कराइछि आयरलैंड रो ऑप्शन डी ठीक अछि
Method of election of the president, nomination of member in the Rajya Sabha by the president, ए दुटा पिक्चर्स भी हमरो आयरलैंड टू बोरो कराइछि कोन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट रो इलेक्शन रो फीचर्स टा आ नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट जो राज्यसभा को मेंबर माने नॉमिनेट करंती से फीचर्स टा मध्ये हमरो आयरलैंड टू बोरो कराइछि सरीला आजिरो पार्ट आपण मानक पई दुटा क्वेश्चन दियाइछि जोडा कि आपण माने कमेंट सेक्शन में जणेबे Which part relate to the official language କରାହେଇଛି को part ଆଉ constituent assembly took days to complete the constitution constituent assembly केते टाइम नेथिला constitution को कंप्लीट करिवारे ए दुईटा क्वेश्चन आपण माने कमेंट सेक्शन रे जणेबे आ जदी वीडियो भल लागिला गोटे लाइक ते करंतु किछि सजेशन रिव्यू अछि तो कमेंट सेक्शन रे देई पारिबे आउ आपण सांग मानक सहित शेयर करंतु जदी भल लागिला आ सब्सक्राइब करंतु नेक्स्ट पार्ट मानक पई आहरी 9टा पार्ट आसीबो हमर एबे 2टा पार्ट सरीची आउ पूरा कंप्लीट तरुण गोल बही को एमसीक्यू फॉर्मेट रे हमें कवर कर देबा किछि भी छाड़ीबानी जतकी इंपोर्टेंट पार्ट अछि सब कवर कर देबा दुईटा क्वेश्चन को आपण माने कमेंट सेक्शन रे तार आंसर को दियंतु ठीक अछि थैंक यू